हाय गाइस। तो आपको आपका स्वागत है सी इंटर ऑडिट के इस बैच में। ये रेगुलर कोर्स है सी इंटर का, मई 25 एंड सितंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए। तो कल हम लोगों का हुआ था 510 इनिशियल एंगेजमेंट का ओपनिंग बैलेंस चेक करना, ठीक है। ये हो गया, अभी स्टार्ट होगा ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए ऐसे 550, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर है? रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। ओके, अभी रिलेटेड पार्टीज है क्या और कौन कौन है? रिलेटेड पार्टीज आखिर है कौन? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अभी रिलेटेड पार्टीज है कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल है, एक पार्टी है, पार्टी दैट इज इधर, मतलब इन चारों में से कोई भी एक। फर्स्ट क्या है? पहले तो है इधर ए रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी डिफाइंड इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ठीक है, और कौन कौन है? ए पर्सन और और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट, ये कीवर्ड है, इसको आप मार्क कर देना। कंट्रोल और सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। ये हो गया सेकंड, कि भाई कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। फोर्थ क्या है? another entity another entity over which the reporting entity over which the reporting entity the
reporting entity has control or significant influence, has control or significant influence another entity over which the reporting entity has control or significant influence. ठीक है. और क्या हो सकता है? another entity that is under common control common control common control with the reporting entity with the reporting entity who having common controlling ownership common controlling ownership common controlling ownership दूसरा क्या है? Owners who are close family members owners who are close family members और तीसरा क्या है? कॉमन की मैनेजमेंट कॉमन की मैनेजमेंट ठीक है. Another entity that is under common control with the reporting entity through having common controlling ownership owners who are close family members and common key management. ठीक है. तो रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है? रिलेटेड पार्टीज इज ए पार्टी related party is a party that is either a related party defined in the applicable FRS, a person or the other entity that has control or significant influence over the reporting of entity, another entity over which the reporting entity has control or significant influence, and another entity that is under common control with the reporting entity to having common controlling ownership owners who are closely family members and common key managers. सोचिए कि जैसे आप XYZ कंपनी और एबीसी कंपनी दोनों के मालिक है या फिर दोनों के की मैनेजमेंट पर्सन है या फिर आपके लाइक आपके भैया XYZ कंपनी पे है और आप XYZ कंपनी के मालिक है. तो ऐसा. ठीक है. अभी इसमें एक चीज देखना है कि कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, क्योंकि इधर तो लाइक ए पर्सन और अदर एंटिटी मतलब एक अगर कोई पर्सन दूसरे एंटिटी के ऊपर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी दूसरे किसी एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल रखे तो भाई ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है क्या? तो कंट्रोल मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? ये क्या है? पावर टू गवर्न, पावर टू गवर्न द financial and operating policies of an entity, of an entity. Power to govern the financial and operating policies. ठीक है? अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? पावर टू पावर टू पार्टिसिपेट participate in the financial and operating policies decisions and operating policy decisions of an entity. पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट करना, डिसीजंस ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी but is not control over the policies, but is not control over the policies. ठीक है? तो कंट्रोल माने क्या? कंट्रोल मतलब पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल, मतलब गवर्न मतलब क्या है? लाइक वही बना रहा है, वही इंप्लीमेंट कर रहा है, ऐसा कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो भी। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। ठीक है? तो पार्टिसिपेट मतलब जब ऑपरेट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज बनाया जा रहा है तब पार्टिसिपेट करना। ये नहीं कि उसको गवर्न करना कि भाई बनाया कैसे जा रहा है, इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, पूरा गवर्न मतलब होलिस्टिक व्यू। ठीक है? तो उसका स्कोप बढ़ जाता है। अभी हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि इधर रिलेटेड पार्टी जो रिलेशन है वो, सॉरी, हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि जो रिलेशनशिप है इन दोनों का, उसमें कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या नहीं? क्या इंडिकेट करेगा? कैसे? तो लिखिए,
the existence of the existence of the following relationships relationships may indicate may indicate the the presence of control or significant influence. Control or significant influence in the existence of the following relationship may indicate the presence of control or significant influence. क्या क्या? First relationship may be direct or indirect equity holding. Direct or indirect equity holding. Equity holding or other financial interest in the entity or other financial interest in the entity. ठीक है. दूसरा क्या है? The entities holding holdings of direct or indirect equity or other financial interest or other financial interest in other other entity. Hey, हाँ. थर्ड क्या है? being part of being part of key management or TCWG, those charged with governance. Being a close family member, being a close family member, close family member of of any person, any person referred to in subpara subpara 3. मतलब ये बीइंग ए पार्ट ऑफ की मैनेजमेंट, मतलब की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का क्लोज रिलेटिव भी हो गए, तब भी कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इंडिकेट कर सकता है.
और पांचवा है having a significant business relationship, a significant business relationships relationships with any person with any person referred to in referred to in सब पैरा 3। ठीक है, तो कौन कौन हुआ? डायरेक्ट और इक्विटी होल्डिंग्स और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी, मतलब जिसके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी हुआ। द एंटिटीज होल्डिंग, अगर एंटिटी का जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसका होल्डिंग अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर दूसरे किसी एंटिटी के ऊपर हुआ, पार्ट ऑफ की मैनेजमेंट और टीसी डब्ल्यूजी हुआ, या फिर उनके उसके क्लोज मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर्स, और हैविंग ए सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप विद एनी पर्सन, मतलब की मैनेजमेंट और टीसी डब्ल्यूजी से। ठीक है, मतलब अगर किसी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग होल्डिंग और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर अपने एंटिटी का ऊपर हुआ, या फिर अ, और एंटिटी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर दूसरे एंटिटी के ऊपर हुआ, फिर बीइंग पार्ट ऑफ की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी हुआ, या फिर उसके क्लोज मेंबर, और हैविंग ए सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, अभी कुछ कुछ टाइम पे ना, ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, ये कुछ कुछ टाइम पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि आप ही का एंटिटी है, ठीक है, कंट्रोल आप ही के पास है, तो आप सोचिए, आप ऐसा दिखा है कि आप उसको, जो अगर एबीसी कंपनी एक्सवाइजेड कंपनी का रिलेटेड पार्टी है, आप दिखा है कि एबीसी कंपनी 10 लाख का माल एक्सवाइजेड कंपनी को बेची है, लेकिन एक्सवाइजेड कंपनी के पास रियल में कोई माल गया ही नहीं, सिर्फ पेपर पेपर में हुआ है माल। तो ये तो एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत बढ़ गया ना, कि भाई फ्रॉड होने का चांसेस, फिर मिसस्टेटमेंट होने का चांसेस तो बहुत बढ़ गया। तो द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ related party relationships related party relationships and transactions may in some circumstances may in some circumstances give rise to give rise to higher RMM, higher
RMM of the of the financial statement, then transaction with related parties, then transactions with parties। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें ये जो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है ना एंड ट्रांजेक्शन, वो हायर रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कर देते हैं, अराइज कर देते हैं, देन ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ हो रहा है उससे ज्यादा रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज कर देते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन। जो नेचर है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन का वो, अभी उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि मैं पॉज कर रहा हूँ अगर टाइम लगे तो। हाँ, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टीज related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and complex range of relationships and structures। दूसरा क्या है, corresponding increases in the complexity, corresponding increase in the increase in the complexity of related party transactions, complexity of related party transactions, transactions, ineffective information system, ineffective information system, information
systems systems at identifying at identifying at identifying identifying or summarizing or summarizing transactions transactions and outstanding balances outstanding balances balances between an entity and its related parties और चौथा क्या है related party transactions related party transactions may not be may not be conducted under normal market terms under normal market terms and and conditions तो अभी क्या क्या चीजों से इंडिकेट कर सकते हैं related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures corresponding increase in the related party may operate through an extensive ठीक है extensive and complex range of transaction corresponding corresponding increase in the complexity of related party transactions
ineffective information system of identifying and summarizing transactions. Ineffective information system at identifying and or summarizing transactions and outstanding balances between entity মানে ineffective information system like identifying and और समराइजिंग ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग जो बैलेंसेस है उसका जो मतलब जो रिकॉर्ड्स रखना होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम इनफेक्टिव है या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मे नॉट बी कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन The auditor shall inquire of management and others within the entity and perform other risk assessment procedures considered appropriate to obtain an understanding of the controls. If ठीक है ठीक है ये हो गया अभी लिखिए द द auditor shall inquire of management and others within the entity within the entity the entity and perform other risk assessment procedures other risk assessment procedures considered considered appropriate to obtain an understanding to obtain an understanding of the entity of the of the controls ये थोड़ा वन नोट का प्रॉब्लम है बीच बीच में अटक जाता है ठीक है फिर से मैं पॉज कर रहा हूँ if any if any that management has established to that management has established to
So the auditor shall inquire management and others within the entity and perform other risk assessment procedures considered appropriate to obtain an understanding of the controls, if any, that management has established to matlab auditor shall obtain an understanding. उफ, ये इतना गुस्सा देता है ना. हाँ ठीक है. द ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को इंक्वायर एंड अदर्स विद इन द एंटिटी. मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी को इंक्वायर करना चाहिए and perform other risk assessment procedure considered approach to obtain an understanding of the controls, if any, that management has established to किस किस के लिए कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है मैनेजमेंट. आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाई सॉरी आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई identify account for and disclose related party and disclose related party relationship and transactions relationship and transactions and transactions in accordance with the applicable reference. दूसरा क्या है? Authorize and approve. Authorize and approve significant transactions. Significant transactions and arrangements with related parties with related parties and authorize and approve authorize and approve significant transaction and arrangement significant transactions and arrangements outside the normal course of business outside the normal course of business. Course of business. ठीक है. किस किस के लिए? आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर and disclose related party relationships and transaction in accordance with the applicable FRF financial reporting framework.
ऑथोराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टीज, मतलब जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है वो ऑथोराइज एंड अप्रूव करने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है कि नहीं, एंड ऑथोराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर भी जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट्स होगा उसके ऑथोराइज एंड अप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, लाइक इसका एग्जांपल क्या क्या होगा। मैं अभी ये हेडिंग है लेकिन मैं अभी पेन चेंज नहीं कर रहा हूँ वरना कट जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड complex equity transaction, complex equity transactions, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, एक्विजिशन हो गया, ये सब। दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन विथ ऑफशोर एंटिटीज, ट्रांजैक्शन विथ ऑफशोर एंटिटीज, एंटिटीज विथ इन jurisdiction with 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 corporate laws। थर्ड क्या है, लीजिंग ऑफ premises or the rendering of management services by the entity
to another party to another party if no consideration is extended. If no consideration is exchanged. ठीक है. और fourth क्या है? Sale transaction. Sale transactions with usually large discount. With usually large discounts or returns. ठीक है. Fifth क्या है? Transaction with circular arrangement. Transaction with circular arrangement. Circular arrangement. Sixth है. Transaction with contracts. Transactions under contracts. Contracts whose terms are whose terms are changed before expiry. Changed before expiry. ठीक है. क्या क्या है फिर? Complex equity transaction. Complex equity transaction. Transaction with offshore entities in jurisdiction with weak corporate laws. Leasing of premises or the rendering of management services by entity to another party if no consideration is sales transaction with usually large discount or returns. Transaction with circular arrangements. ठीक है. एंड ट्रांजेक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टर्म्स आर चेंज, मतलब जिसका टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ है बिफोर एक्सपायरी. अच्छा, ये सारे तो हो गए एक बड़े बड़े कंपनी को लेके ना. पॉज कर रहा हूँ मैं फटाक से. हाँ. अच्छा, तो ये तो हो गया हम लोग लाइक बड़े बड़े एंटिटी का हम लोग देख लिए कि भाई इक्विटी ट्रांजैक्शन, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सब सारे सारे चीज देख लिए हम लोग. स्मॉलर एंटिटीज में क्या टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी. ठीक है. व्हाट अबाउट स्मॉलर एंटिटीज? कंसिडरेशन durations specific to smaller entities. ठीक है. Obviously to control activities activities in smaller entities are likely to be less formal, are
likely to be less formal and smaller entities may have no documented may have no documented processes processes for dealing with dealing with related party relationships and transactions and transactions. Control activities in smaller entities may have no documented process. Obviously, less formal होगा and small entity may have no documented process. ठीक है. Also, an owner an owner may mitigate may owner বা manager may owner or manager may mitigate some of the risk some of the risk arising from arising from related party transactions related party transactions or potentially increase those risks increase those risks through through active involvement in all the main aspects of the transaction in all the main aspects of the transaction. अभी उन लोग वो सारे एंटिटीज के लिए ऑडिटर क्या कर फॉर सच एंटिटीज द ऑडिटर may obtain an understanding of the of the related party relationships and transactions
relationships and transactions and and any controls that may exist that may exist over this through through inquiry of management combined with other procedures of management combined with other procedures such as observation of management's observation of management's oversight and review activities and inspection of available relevant documents available relevant documentation relevant documentation ठीक है मतलब इसमें क्या बोला गया है कि ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस बात है कि स्मॉलर एंटिटी में जो कंट्रोल एक्टिविटी होगा वो लेस फॉर्मल होगा एंड नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस भी हो सकता है स्मॉलर एंटिटी में and the and owner manager may mitigate some of the risk arising from related party transaction or potentially increase those risks मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो ओनर और मैनेजर है या फिर दोनों एक ही बंदा हो कोई भी हो तो वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन मिटिगेट सच रिस्क they can eliminate such risks but they can possibly increase those risks through active involvement in all the main aspects of the transaction okay फॉर सच एंटिटीज ऑडिटर में ऑप्टेन मतलब वो सारे एंटिटीज के लिए ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप्स को लेके एंड एनी कंट्रोल दैट मे एग्जिस्ट ओवर दिस मतलब उसके ऊपर अगर कोई भी कंट्रोल है उसका भी such as observation of management's oversight and review activities and inspection of available relevant मतलब inspection of documents भी तो होना चाहिए एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड रिव्यू एक्टिविटीज मैनेजमेंट जो ओवरसाइट मतलब ओवरसाइट करते हैं रिव्यू एक्टिविटीज को और वो सारा भी ऑब्जर्व करना चाहिए ठीक है अभी एक ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा उधर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप है या नहीं इससे पॉज हाउ कैन एन ऑडिटर हाउ कैन एन ऑडिटर verify the verify the existence of related party
relationships and transactions. Relationships and transactions. How can an auditor verify the existence of related party relationships and transactions? एंटिटी का इनकम टैक्स रिपोर्ट को लेके एंटिटीज इनकम टैक्स रिटर्न्स, दूसरा हो सकता है इंफॉर्मेशन सप्लाइज बाय द एंटिटी टू रेगुलर, मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी मतलब जो रिटर्न उटर्न या फिर ऑडिट रिपोर्ट कुछ भी फाइल किया है उससे, भाई वो भी तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही फाइल किया गया, इंफॉर्मेशन सप्लाइड। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बस क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मिटाने जाऊंगा तो फिर से वो समय का पहिया आ जाएगा। सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। फोर्थ क्या है? शेयर होल्डर रजिस्टर्स, शेयर होल्डर registers to identify, registers to identify, to identify the entity's principal shareholder, the entity's principal shareholders, records of the entity's investments, records of the entity's investments, and those of its pension plans, and those of its pension plans, life insurance policies, life insurance policies assured by the entity, assured by the entity, and seven क्या है? Significant contracts, significant contracts renegotiated, renegotiated by the entity, during the period। ठीक है, तो क्या क्या है? एंटिटीज इनकम टैक्स रिटर्न्स, entities income tax returns, information supplied by the entity to regular or activity authorities, internal auditor report, shareholder registers to identify entities principal shareholder, record of the entities investment and those of its pension plan, life insurance policies,
and significant contracts renegotiated by the entity during the period। ठीक है, तो ये सारे हैं जिससे ऑडिटर may find out about related party relationships and transactions। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त हुआ। आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था लेकिन ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। कल होगा इसे 520 एनालिटिकल पूछेगा, फिर चैप्टर नंबर 4 खत्म। चैप्टर नंबर 4, हाँ कल अगर हो गया, अगर कर पाए तो कल ही चैप्टर नंबर 4 खत्म। उसके बाद स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, हाँ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसमें मजा आएगा। तो चलो बाय। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिएगा। तो चलो, और अभी ये रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद रिवीजन क्लासेस भी आएगा, तो मजा आएगा। बाय।